Hi, and today we'll discuss about the theory of authority by Max Weber. Max Weber is a renowned sociologist who is responsible for books like Sociology of Religion, and again one of the most important sociologists of all time. That's Max Weber. एक थ्योरी इनकी बहुत फेमस है. If you recall your memory, theory of bureaucracy, ये इन्होंने डेवलप की. Theory of social action was also developed by Max Weber, and he defined sociology as a study of social action. आज हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ अथॉरिटी है, तो इस पे स्टिक करेंगे हम. फर्स्ट टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ अथॉरिटी इज ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी. ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी जस्ट बिकॉज ही गेव थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. आज हमारे पास जो ब्यूरोक्रेटिक निजाम है, लाइक वी हैव CSPs एंड देन वी हैव हायरार्किकल सिस्टम. इसके अलावा हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फॉर्मल आउटलुक होता है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का. It's only because of Max Weber, because he developed that concept. The bureaucratic authority is directly taken from, this concept is drawn from bureaucracy. It's a rational legal authority based on law or written rules and regulations, also called as bureaucratic authority. It means authority तो है, but authority is given to a specific person through a proper formal procedure. like इंसान ने टेस्ट क्लियर किया and वो जज बन गया, अब उसके पास अथॉरिटी है कि वो फैसला सुनाए. एक इंसान जो है उसको अथॉरिटी दी जाती है कि वो क्राइम को कंट्रोल करे एक स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन में, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है. रीजन क्या है कि उसने टेस्ट क्लियर किया, फिजिकल टेस्ट भी क्लियर किया, एंड देन अगेन जो रिटन टेस्ट था वो भी क्लियर किया, एंड देन ही वाज फाइंड फिट फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब. दैट्स व्हाई उसको अपने पुलिस ऑफिसर तस्लीम कर लिया, एंड उसका काम जो है कंट्रोल द क्राइम इन दैट स्पेसिफिक jurisdiction. What I'm trying to say, bureaucratic authority is basically formal authority in which there are some certain rules and regulations. अगर एक पुलिस वाले के पास अथॉरिटी है तो उसके पास अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो उसको फॉलो करने होते हैं. सेम गोज फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ अ कंट्री, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑफ दिस कंट्री, ऑफ कोर्स पाकिस्तान. मकसद कहने का ये है कि ये जितने भी इदारे हैं, जितने भी ये फॉर्मल पोजीशंस हैं, वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, ये सब बेसिकली फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटीज होती हैं. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड करती है और इनको हासिल करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू इनको ये अथॉरिटी मिलती है. Then we have traditional authority. Traditional authority again is based on customs and traditions and norms. Like हमें पता है कि we are living in a patriarchal society. Patriarchal society is the society in which male is the head of the family. So we know कि मोस्टली जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर या एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, उनमें जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो मर्द होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स फादर. तो फादर को जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो बेस्ड ऑन कस्टम्स, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन मिल गई. सेम गोस फॉर द प्रीस्ट, और मस्जिद का कोई मौलाना साहब हो, मंदिर का कोई पंडित जी हो, उनको जो अथॉरिटी होती है, लाइक उनके पास लाइक मुफ्ती, उनके पास फतवा का पावर होता है. ये सारी जो बातें हैं ये उनको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू मिली है, बिकॉज रिलीजन आल्सो कम्स इन ट्रेडिशन. उसके बाद हमारे पास एक किंग का सिस्टम आ गया कि किंग इसलिए किंग बनाया क्योंकि ट्रेडिशन ने उसको बनाया है, अथॉरिटी ने उसको बनाया है. आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी किंग या कोई भी जो आज के दौर में जो एक मौरूसी निजाम हुकूमत बादशाह का चल रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो वहां पे वो कुछ सर्टेन एग्जाम पास करके या कोई मैंडेट लेके, वोट लेके लीडर बन गए. नो, वो इसलिए लीडर बने क्योंकि वो लीडर के बेटे थे. दिस इज ट्रेडिशन. इसके बाद वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिस्मेटिक अथॉरिटी. कैरिस्मेटिक या जो कैरिस्मा है या कैरिस्मा है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है. इट्स बेसिकली अ क्वालिटी बाय व्हिच यू अट्रैक्ट पीपल. आपके बोलने का अंदाज, बाय व्हिच पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड, लाइक they are getting fascinated by you because the way you interact, your facial features, your ideas, your thoughts, based on that कुछ इंसानों को एक गिफ्ट मिलता है from God. That's again individuals outstanding traits by which people are attracted. Most common example being a Pakistani, I can say that's Muhammad Ali Jinnah, the founder of this country, and then Sayyid Ahmad Khan. At the same time, we have different leaders around the world. Like as a Muslim, I'll say Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, is one of the most charismatic personalities. इनके पास charismatic authority थी. So these were the basic types of authority. If you have any question, तो आप comment section में question पूछ सकते हैं.
Thank you so much.